Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अच्छा, Hello, yeah. So, good afternoon, everyone. We welcome you to this edition of Toppers Talk. And today we have the pleasure of introducing Ms. Garima Agarwal, who has secured All India rank 40 in this particular examination in this year. Can we have a round of applause for her? So, she hails from MP and she is an engineer by the background. And this year, she's already got into police services last year, and this year she would be joining the administrative services. And we congratulate her and would like to invite her for the talk. Thank you. good evening, everyone. So I would like to start with one fact that today it is kind of a surreal feeling for me. Why? Two reasons. First, coming back to Karol Bagh, Old Rajendra Nagar always feels great. Coming back here for the first time after the result, and it's been actually quite a long time. So हर aspirant, हर candidate की ये कर्म भूमि होती है, तो यहाँ आकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है. और दूसरा कारण कि मेरी शुरुआत भी तैयारी की कुछ इसी तरह से हुई थी. जब मैं तैयारी शुरू की थी
उस साल रैंक 44 2016 में हिमांशु जैन सर का रैंक 44 आया था. He was from my college, my senior. He was giving such a talk at Vision itself. I listened to that talk very carefully. And I not only imbibed some of his suggestions into my preparation, but only the fact that he was there at the dais kind of inspired me कि I have to be there one day. And this is how rank 44 kind of became my dream rank. वो no, I'm sure आप लोग सबके टेबल पे होती होगी वो एक ड्रीम रैंक. तो I'm fortunate, ईश्वर की कृपा है कि सच में वो सच हो पाया. So that's from my side that it's a surreal feeling. I hope you too feel good and not too stressed after the prelims. तो शुरुआत करने के पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों में से कितने लोग 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? Almost all of you. And how many of you gave prelims yesterday? A few of you. ठीक है. So how was it? Okay. I know that I can get it. This is everybody feels the same. I had the same expression last year day after prelims. तो ठीक है. So today's talk I'll divide into major 3 and 4 parts just to share the timeline initially itself. So in the first part, I would like to introduce myself and take you through my journey in a brief way so that whatever I learned from this journey, whatever lessons I got, if at all you're able to relate to it, if at all any candidate is able to relate to it, I'll feel that it is worth sharing. And secondly, I will discuss the strategy part, all 3 stages, prelims, mains, interview, because most of you are going to appear for 2020. So you would like to know all 3 stages of the exam. And towards the end, I would like to discuss a few pointers on how to survive ORN and how to survive this preparation, because I'm sure that is also a challenge. It's not just the exam, it's the whole duration and preparation that you have to go through, and that's what makes this exam so difficult and so beautiful. So let us come to the first part. As Puneet sir has already introduced me, I'm Garima Agrawal. I come from Khargone. Has anybody heard this name before? You're from Khargone. What's your name? Great. So wherever else I have ever been, nobody knows Khargone. So he would be able to tell you that it is one of the remotest towns of Madhya Pradesh. I'm probably the first IAS to get selected from the town since independence. And before this, my sister is qualified UPSC, but All India services, I think it's the first selection. So I come from there, and I'm sure a lot of the candidates here in Delhi come from small towns of hinterlands of India, and they come with these fears, apprehensions and insecurity that how will we compete? There are 10 lakh people who fill up the forms, 5 lakh people who appear for prelims. There are people from DPAs, there are people from modern school, what not. Where do we stand? Do we even stand? हम उनकी जितनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते, हम उनके जितने अच्छे हाई फाई सर्कल से नहीं आते, बट अगर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर तो आप लोग सब भी खड़े हो सकते हैं. तो सच में what really matters in this exam is your substance, what is there inside you and your confidence, and not where you come from. Rural, tribal, urban, doesn't matter. So that is first thing, which was one thing which was in my mind when I came here. Second part of my introduction would be also language. Like I just said, I come from Khargone. I also did my schooling from Hindi medium, because when I was a kid, there was probably not a very good English or CBSE school that time. I did my schooling in Hindi and MP board, and so it was hard, especially those transformational teenage years of your life when you're preparing for IIT, JEE, EEE, NEET and whatnot. I was struggling with this language problem. I didn't know what word meant what, and that also kind of created some problem. I kind of coped up with this problem during college because I went to a South Indian college, but then initial phase of UPSC preparation was also hard. I'm sure The Hindu आप लोगों के लिए भी जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या होगी, है ना?
तो वो सबके लिए है, मेरे लिए भी थी। हर रोज बस यही सोचकर टेंशन आ जाता था कि यार 3 घंटा तो अब यही ले लेगा, पढ़ूं कब। तो हर चीज का सोल्यूशन होता है, तो इसका भी है। सोल्यूशन क्या है? वही प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूज़पेपर। इसलिए चाहे कितनी ही करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, कितने ही मटेरियल हो, मैंने अखबार पढ़ना नहीं छोड़ा। आई ऑल्सो टुक हेल्प ऑफ ऑल दोज मैगजीन्स, बट पेपर आई कंटिन्यूड रीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द इंटरव्यू, सो दैट मेरी लैंग्वेज बनी रहे, उससे टच बना रहे, मेरी राइटिंग में वो फ्लेयर आ जाए, मेरे बोलने में इंटरव्यू में वो फ्लेयर आ जाए। इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है कि आप हर रोज पेपर पढ़ें, और पढ़ पढ़ कर डेफिनेटली आप टाइम रिड्यूस कर लेंगे, आप आराम से कंफर्टेबली 2 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। और अल्टीमेटली कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड नॉट अ जजमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, है ना। तो उसे बस उसी तरह से ले, तो आई एम श्योर इट विल नॉट बिकम अ हर्डल टू योर सक्सेस। Third thing, my background, as he said, I am an engineer. I have done my BTech and MS from IIIT Hyderabad in EC. And how many of you are engineers here? Oh, that's a surprise, because again, like usually in a classroom, strength 70-80% is engineers. It's not that I have special attachment towards the engineers. Everybody is same. It just I want to say that like any other engineer, while I was taking this decision of preparing for civil services, I was also facing that dilemma कि जॉब करें, यूपीएससी की तैयारी करें, एमएस करें, क्या करें। एक तरफ आपको ऑल दोज एमएनसीज आर ऑफरिंग यू हैंडसम पैकेजेस, दूसरी तरफ यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड, तीसरी तरफ you have this little dream of yours and your parents that you should become an IAS, and that time decision kind of becomes tough. और आप लोग भी जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं, आई एम श्योर आपकी लाइफ में वो डायलेमा तो होगा ना एक टाइम पे ग्रेजुएशन के बाद कि करें तैयारी ना करें, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रिस्क है। तो आपका कारण जो भी रहा हो इस डिसीजन को लेने का, एक बार वो कारण अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, एक बार जो डिसीजन ले लिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखिए। Especially that you have come here now already for the preparation, keep reminding yourself कि मैंने खुद का decision है और अब मैं पीछे नहीं देखूंगा या देखूंगी, and give it at least 1 sincere year of your preparation. ऐसा मुझे लगता है। आई एम श्योर देर आर अ लॉट ऑफ टॉपर्स हु डिड इट विद जॉब, एंड आई एम श्योर यू कैन, बट मुझे लगता है कम से कम वो एक बेसिक साल होता है ना, जब आप वो सारी पॉलिटी और ये सब पहली बार पढ़ रहे होते हो, ऑप्शनल तैयार कर रहे होते हो। 1 sincere attempt, that's what I'm asking from all of you. 1 sincere attempt you give without keeping any parallel idea in mind कि इसके साथ में MBA कर लेता हूँ, इसके साथ में जॉब कर लेता हूँ, इसके साथ ये एग्जाम दे देता हूँ। नो, 1 year focused approach. After that, based on the result, you decide what you want to do next. So this was my kind of journey. So I did my graduation from IIIT. Immediately after my final year, I did have offer, but I decided I have to prepare. I came to Delhi. I started my preparation. I got All India rank of 241 in CSE 2017. I got allotted IPS, and then immediately after that, I appeared again, and this year I have secured rank 40. With this journey and these lessons that I learned, I would like to move forward to the strategy part. Strategy, let us discuss prelims first. Prelims, I think if we look at 2017, 18 and now 19, prelims has become the most whimsical part of this exam. Earlier it used to be कि prelims तो हो जाता है, सिर्फ mains पर ध्यान दीजिए, but आजकल मेजर फिल्टर तो प्रीलिम्स में ही हो जाता है। पेपर इज एक्सट्रीमली टफ, अनप्रिडिक्टेबल, कॉन्सेप्चुअल, और इस बार के लिए भी यही सुनने में आ रहा है। तो उसके लिए कैसे पढ़ें? पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है ये एग्जाम क्यों इंडिया की सबसे टफ एग्जाम मानी जाती है? डू यू थिंक पेपर्स आर डिफिकल्ट? I think it is considered as the most difficult exam because of its vast syllabus. Syllabus is so vast, time is so less, and then how to manage. और वहाँ पर the key lies in time management. जो भी लोग पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं, not that they are super intelligent or they are super human. It just उनने टाइम सही से मैनेज कर लिया,
मेहनत फ्रूटफुल हो गई और रिजल्ट आ गया। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक मेजर टाइमलाइन बताना चाहूंगी कि किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। अगेन हर टॉपर की, हर सिलेक्टेड कैंडिडेट की अलग स्ट्रैटेजी होती है, आप भी अपनी स्ट्रैटेजी अपनी बनाइए, बट आई वुड जस्ट शेयर माइन इफ एट ऑल इट हेल्प्स यू। सो फॉर एग्जाम्पल, when I was writing prelims in 2017, we had exam on 3rd June, like this time we had 2nd June, और मैंने sincerely GS, you can start GS say December, January around, you have good 6 months, and then you can divide your syllabus into month, weeks and days. तो I would take up 1 month कि January लिया, January is completely dedicated to history, modern history, world history, ancient history, medieval, post-independence, art and culture, everything. Then एक month लिया, उसमें I decided I will do geography and environment. Then 1 month economics and polity. And on the first day of every month, I would make a detailed timetable of what I'm going to do this month. तो 1st of January को I knew कि 27th को January को मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। 100% नहीं हो पाता, सच में टफ है, बट अगर प्रॉपरली प्लान किया जाए, लीनियंटली प्लान किया जाए तो हो सकता है। सो टाइम टेबल एंड देन वीकली एंड डेली। सो हर रात को सोने के पहले अगले दिन का टाइम टेबल तैयार कर लिया जाए कि कल सुबह उठते से सुबह के 4 घंटे मुझे न्यूज़पेपर प्लस ये पढ़ना है, आफ्टरनून में ये सब्जेक्ट, शाम में ऑप्शनल, 1 घंटा आंसर राइटिंग एंड सो ऑन। अगर ये टाइम टेबल रेडी है ना तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो टेंशन नहीं होगा क्योंकि यू नो आपकी तैयारी पेस के साथ चल रही है, जो सिलेबस है टाइम में लिखा है और होते जा रही है। और दूसरा फायदा ये होगा कि जो वो बोलते हैं कि टेंशन हो जाता है, ये है वो है, क्योंकि because you are so busy reading that particular topic that you have designed for that particular hour, you won't get time to think about anything else. आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि अरे एग्जाम आ रही है, रिजल्ट क्या होगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। यू ओनली थिंग यू विल लुक फॉरवर्ड टू विल बी द टास्क ऑफ द डे। अब टाइम टेबल की बात आती है के बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात आती है सोर्सेस, है ना। डिफरेंट कोचिंग्स, डिफरेंट सीनियर्स, टीचर्स सजेस्ट डिफरेंट सोर्सेस एंड वो आपकी फाइनल चॉइस होनी चाहिए। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि एक सब्जेक्ट का 1 या मैक्सिमम 2 सोर्सेस रखिए, ठीक है। हाँ, यस, या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो ट्राई एंड कीप ओनली 1 source for 1 subject or 2 source so that you give more time for revision. I would briefly discuss my sources because that is the most often doubt I'm being asked post the result. No matter wherever you post it, but that doubt is always there, na. Old NCERT, new NCERT, Lakshmikant, DD Basu, all of that. So briefly I'll tell you my major book list of prelims. Polity, Lakshmikant, nothing else. Medieval history, both modern India, NCERT, written by Bipin Chandra and Spectrum. Ancient history, R.S. Sharma, NCERT. Medieval history, I did not do much. I just read through that thin Tamil Nadu book on history, that thing. Art and culture, Nitin Singhania. Geography, 11th and 12th ki NCERTs, all 4 NCERTs. I did not read G.C. Leong. You might ask doubt again, that's why I'm clarifying right now. Environment, Shankar IAS, that book is Bible for you. Especially prelims, now that the forest services is combined, you have to read it. Economics is the one subject everybody is doubtful about. I was also the most confused. So for basic static part of economics, I read this very thin book, K. Shankar Ganesh. It gives those concepts like basic concept of GDP calculation, GVA, inflation and those kind of conceptual static part जिसके 5-6 questions आते ही है prelims में. That book kind of really helped me. Apart from that, obviously you have to read budget, economic survey, government schemes, report indices, everything. So 4 or 5 sources together forms your economics and you cannot ignore any of them. Then comes science and tech. I did not refer to any book. I just went through the current affairs compilation of the year, be it PT 365 or anything else. International relations, no book, just the current affairs compilation and it should be good. Now sources are discussed. Next important thing in prelim strategy is questions. Questions
में when I say questions, what comes to your mind? Mock, test paper, question paper. But why not previous year UPSC questions? I think they should be our priority. And sometimes we do take it for granted. So the timetable that I was discussing, that every month I'll divide for one subject, I will always keep 1 or 2 or even 3 days just for previous year question paper of that subject and some 2 to 3 sectional tests of that subject. So you take up a subject, you fix its source, you complete that source towards end of the month or end of the week, you attempt 2 to 3 question papers, you attempt all the questions of previous year UPSC, 10 years at least, of that particular section, and then you revise. After attempting the question only, you'll get an idea how much you read, how much you didn't. Because most of you are kind of freshers and you're going to write next year. I can tell you, when I started, I would read a book and would not even realize whether it's useful or not. Would complete the book but will not get good marks in the question paper because we don't know what comes in exam and what doesn't. इसलिए questions करते रहना है so that you get an idea of what is the demand of the exam. So this is about mocks and previous year question. Third important part of prelim strategy is smart studies. Smart studies everybody is talking about, but one needs to understand what do they mean by smart studies, है ना? So what do you mean by smart studies? Can anybody tell me here? To fasten the process of the timeline that we have framed. Focus on quality other than quantity. It is important to know what not to read. Okay, so there are many interpretations, all of you are right. My interpretation was that to do cost benefit analysis of everything in the syllabus, to be very aware of the syllabus and put your energy only on the subjects that are part of your syllabus. So if you're reading newspaper, keep your syllabus in mind and only read those articles which are relevant. When you're doing science tech, do not put 1 week just reading science tech because you know जो exam में question आएंगे वो जो आपने पढ़ा है वहाँ से तो नहीं आएंगे. So when you're doing say map for geography, no need to prepare 1 full map of Japan, Australia and sitting 4 hours keeping the atlas open. And I know I'm not trivializing these methods of preparation. At one point these were relevant. 2011 and 12 के time पर I've heard इतना geography आता था 30-40 question और वो भी map के question, वो भी static, कि तब लोग actually एक week सिर्फ atlas तैयार करने में देते थे. पर अब वो style रखेंगे तो नहीं boss, वो smart नहीं है. क्यों? क्योंकि अब आप pattern देखिए 16, 17, 18 and 19 prelims उठाकर देखिए, there is, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कुछ न कुछ करके वेस्ट एशिया से क्वेश्चन जरूर आते हैं. आइदर दे लास्ट की गोलन हाइट्स कहाँ पर है, और दे लास्ट मसूल और रक्का कहाँ पर है, और दे लास्ट जॉर्डन मेडिटेरेनियन को टच करता है कि नहीं, और दे लास्ट मेडिटेरेनियन को इनमें से कौन सी कंट्री टच करती है कौन सी नहीं. डोंट यू थिंक सेम क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है इन वन फॉर्म और द अदर? दिस ईयर ऑल्सो, है ना? तो दैट शोज कि हाँ यूपीएससी का ये वेस्ट एशिया में बहुत इंटरेस्ट है. तो मैं बस एटलस खोलकर वेस्ट एशिया 2-3 घंटा अच्छे से देखूंगी. मैंने तो निमोनिक्स भी बना दिए थे कि रेड सी को टच करने वाले कौन कौन सी कंट्रीज है, मेडिटेरेनियन को करने वाली कौन सी है. मेडिटेरेनियन तो हो नहीं पाता है, बहुत सारी है, बट सारे इंपॉर्टेंट सीज, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इंपॉर्टेंट सिटीज. साउथ ईस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है. गॉन आर द डेज कि आप जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका करो. मैं ये नहीं बोल रही हूँ मत करो, अगले साल आ जाएगा, यू गाइज विल कर्स मी. पर ऑल आई एम सीइंग कि इसको इंपॉर्टेंस दो. तो अब मैंने कैसे किया था इस चीज को तैयार कि जिस दिन मैं आईआर की बुकलेट पढ़ती थी ना, पीटी 365, उसी दिन एटलस भी लेकर बैठती थी और जो कंट्री, स्टेट, सिटी आती थी उस बुकलेट में वो मैप पे भी पॉइंट करती रहती थी. तो बाय द एंड आई फिनिश दैट बुकलेट, मेरा एटलस भी लगभग तैयार हो गया था. तो इट वाज समवेयर अ मिडिल पाथ बिटवीन स्टैटिक एंड करंट.
So this is one example of current smart studies. Second example is you have these international organizations. IORA का नाम सुना है जिनने इस साल प्रीलिम्स दिया है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, है ना? उसके कुछ 21 मेंबर स्टेट्स है आई थिंक. सो वन वे इज कि वो 21 नाम सारे याद करो. अदर इज कि मैप पे देखो, समझ आ जाएगा कि अच्छा इंडियन ओशन है, उसकी रिम पर जो जो कंट्रीज है वो सब है एक्सेप्शन दिस एंड दिस. म्यांमार है आई थिंक वन ऑफ देम, पाकिस्तान. तो वो आपकी काम जो 20 मिनट का है 2 मिनट में हो गया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर टाइम एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू मीट योर टाइमलाइन. एंड जो आप बोल रहे थे, है ना, तो दिस इज अबाउट स्मार्ट स्टडीज. अब ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात. मुझे ये लगता है एग्जाम देने के बाद, स्पेशली 18 वाला एग्जाम देने के बाद, कि आपकी सारी पढ़ाई एक तरफ और एग्जाम वाला दिन एक तरफ, दोनों का 50-50% वेटेज है. इसलिए जिस दिन प्रीलिम्स है उस दिन सुबह उठकर अपने आप से कहना है कि दिस इज द बेस्ट डे इन माई लाइफ. My brother did that for me. जिस दिन prelims था सुबह सुबह he called me to wish me luck and he said remember 3rd June is going to be the best day in your life and I was like क्या बोल रहा है. But that kind of did raise my confidence. I became so happy कि अरे आज तो मेरा दिन अच्छा है. फिर पेपर कैसा भी आया I was still happy. So second, when the question paper comes to your hand, give it a smile no matter how difficult it is. बुरा है तब भी हंसो कि हाँ हाँ क्या पढ़ा मैंने, और अच्छा है तब भी हंसो कि देखो कितना बढ़िया पढ़ा मैंने. All is well. So that smile, trust me, will really help you in maintaining a confidence, but overconfidence नहीं. दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम. प्री के लिए आई एम श्योर आपके टीचर्स ने और भी टॉपर्स ने बताया होगा कि राउंड अप्रोच होती है. एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, सिर्फ वही क्वेश्चंस करो जिसमें आप 100% श्योर हो. आई एम श्योर 40-50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होंगे जो आपको 100% आते होंगे, रैंक 1 को भी नहीं आते होंगे. वो कर लिए लगभग 1.5 घंटे में. यू ट्राई एंड हैव दैट फर्स्ट राउंड, देन यू हैव अ सेकंड राउंड वेयर यू लुक एट द क्वेश्चंस वेयर यू आर 75% और 50% श्योर. देन यू एनालाइज कितने क्वेश्चंस हो गए. यू सी कि सिर्फ 60-65 हो रहे हैं बट क्वेश्चन पेपर सीम्स इजी. देन यू टेक लिटिल मोर रिस्क कि यार 60 तो बहुत कम है, एटलीस्ट 75 तो कर देता हूँ. आई एम सॉरी 75. देन और इफ यू सी नहीं पेपर टफ है देन डोंट गो फॉर अ 90 बिकॉज एक मॉक दे देकर समझ आ जाएगा कि पेपर टफ है या इजी. एंड व्हेन यू हैव एन आइडिया दैट पेपर इज डिफिकल्ट देन डोंट unnecessarily mark negative, do anything which leads to negative marking. No point doing 90 questions, 95 questions. Find that safe score. I think attempting a lot of mock tests from different coachings of different difficulty level will help you find out your weakness and strengths. That okay, this is my safe number of questions and this is where I perform well. So attempt that paper well. So this was and last thing is just before prelims, that last month na June mein, I'm sure most of you would have done, give some time to those little tidbits on government schemes, reports, indices, national parks, articles of important articles of polity, because these are the things no matter whenever you read you will forget. So always have a buffer time for these kind of booklets towards the end of prelims, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं 7-8 क्वेश्चंस तो बन जाते हैं. 7-8 क्वेश्चन इज अ लॉट इन प्रीलिम्स, है ना. ये होता है प्रीलिम्स. नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेज दैट इज मेंस. तो a few of you have given prelims already. I am hoping that you will get a call for mains, and all of you give prelims thinking that you will write mains. I think this was one of good thing or bad thing that my state of mind used to be that I'm writing mains. जब तैयारी की थी शुरू तब से ही. That's why I always used to have an integrated approach towards studies. So when I was reading a GS, I would not think ये prelims के लिए है. I would also think कि अच्छा ये geography पढ़िए, इससे mains का ये question बन सकता है, prelims का ये बन सकता है. तो mains की अगर बात करें, timeline अगर मैं discuss कर लूँ, तो अगर अगले साल जून में एग्जाम है तो ट्राई करिए कि इस साल के दिसंबर के पहले ही मेंस का मोटा मोटा चीजें तैयार हो जाए. वो क्या है? ऑप्शनल, एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल इश्यूज, ऑल दोस टॉपिक्स विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस. Again, I'm assuming that it would, if it's your first or second sincere attempt, then this timeline kind of helps.
तो जनवरी तक आते आते यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे ऑप्शनल के सारे नोट्स बने हुए रखे हैं, एथिक्स के रखे हैं, ये रखे हैं, अब मैं आई एम इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, नाउ आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन GS. And that GS could be both mix of prelims and mains. That is first thing कि आप पहले से नोट्स बना के रख लें. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर आप नोट्स बनाने बैठे तो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा. तो प्लीज हैव दैट हैंडी पहले से. अब प्री टू मेंस में हाउ कैन यू डिवाइड योर प्रिपरेशन इज वाया टेस्ट. So you prepare, you revise, and you give some sectional test, both of GS and of optional, so that it gives a pace to your preparation. Second, it improves your answer writing and quality. You are constantly practicing. And third, it helps you complete the paper. I think mains ka most difficult part is length of the paper. Paper is so lengthy. 20 questions, 250 marks, 250 words each, almost 3 hours. It's very hard. And out of that, you hardly know 13 or 14 questions. Ultimately, those 6 questions, everybody kind of does not bluff per se, but does some guesswork or makes an answer there itself. For that, it is very important that you're thorough, you are well practiced before you go to the examination hall. तो वो बहुत important है. दूसरी चीज़, answer writing I have already mentioned, but answer writing has to be kind of started from the beginning of the preparation. है ना? Answer writing is another thing most candidates have doubts about. So what can you do? There are multiple ways. In my strategy, what I did was to, I used to practice 2 answers every day, at least 2 to 3 answers. So what I did was that I used to read my newspaper. You finish the newspaper and then I'll try to attempt 2 answers based on the editorials of the day. And there are online platforms where they give you questions, 7-8 questions daily. Choose any 2 or 3 of them, attempt questions. You will not only be able to revise your current affairs, but will also help you improve your answer writing. And don't be scared. You know, start with whatever you have, with all the fears. Initially you'll feel I'm not able to write even half a page answer. Because nobody has, a lot of us during graduation lost touch with answer writing and humanities kind of writing. So it will take time, 2-3 months you give, and gradually you yourself will see improvement, a lot of improvement in your writing. So please start, because it's human nature, we don't like to write. We like to type, we like to chat, we like to talk, we don't like to write. But UPSC में ज़रूरत सबसे ज़्यादा उसकी ही पड़ती है, राइटिंग की. और दूसरी चीज़, प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग, एक्चुअल रैंक मेन से ही आएगी. एक बार रैंक आ गई तब भी इट्स नॉट इनफ. फिर लगेगा सर्विस कौन सी मिल रही है, सर्विस मिल गई फिर लगेगा कि ऑल इंडिया क्यों नहीं मिली, फिर लगेगा IAS क्यों नहीं मिली, फिर लगेगा कार्डर कौन सा मिल रहा है, और तब यू विल रियलाइज आंसर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था. सो इफ यू वांट अ गुड सेफ स्कोर इन मेंस, गुड लाइफ इन फ्यूचर, देन प्लीज फोकस राइटिंग अभी से. आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजर रोल ही स्ट्रक्चर का है. ये भी मैंने अपने टाइम पर जो टॉपर्स रहे थे उनकी ही वीडियोस से सीखा था कैसे करना है. बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. बट व्हाट इन इंट्रो? If it's a polity answer, you can safely start with an article. Question on Finance Commission, you start, okay, Article 280 talks about this, 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 and this. Safe, if nothing else comes to your mind. If it's a question on some burning issue, female feticide, or water problem, solar energy, some criminal cases pending, judiciary, police, all this. So, unke liye what can help? Facts and figures. For that, you will have to do some preparation now. हर रोज न्यूज़पेपर में इतना आता है, विजन की और इन सारी करंट की बुकलेट्स में आता है कि सो एंड सो नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन इंडियन कोर्ट्स, सो एंड सो पीपल, वी जस्ट हैव these many cubic liter of water per person and all water will be exhausted by say 2050 and so on. So ये सारे facts हमें पढ़ते समय लगता है याद रह जाएंगे, बट नहीं रहते. तो keep a little diary or a note on your phone only which is handy, जिसमें सारे important facts figures रख लो. मेंस के टाइम पे बहुत काम आएंगे. एंड ट्रस्ट मी, आंसर लुक्स सो इम्प्रेसिव व्हेन यू स्टार्ट विथ अ वेरी गुड फैक्ट, है ना.
So that could be one intro. Then if it's an intro in GS4, then probably it can start with a quote. वो ends and means type के questions बहुत आते हैं, तो महात्मा गांधी के 2-4 quotes रट लो, वो हमेशा काम आएंगे. तो इस टाइप के कोड से आप आंसर शुरू कर सकते हैं. फिर बात आती है बॉडी की, जो स्ट्रक्चर क्या है, उसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. वहां पर कोई फ्लारी लैंग्वेज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा डोंट यूज जार्गन्स, डोंट यूज वेरी हाई फाई वर्ड्स, टू द पॉइंट. डिमांड जो क्वेश्चन की है वो करो. कुछ कंपेरेटिव एनालिसिस है तो टेबल बना दी, दिस वर्सेस दिस. कुछ प्रो एंड कॉन्स पूछे तो प्रो के 5 पॉइंट्स, कॉन्स के 5 पॉइंट्स. कुछ पॉलिसी एनालिसिस पूछा है, इंट्रो दे दिया, एनालिसिस कर दिया, लूप होल बता दिए, कोई कमिटी की रिकमेंडेशन बता दी. तो वहां पर आपको डायग्राम बनाइए. GS1 और GS3 में तो बहुत डायग्राम बन सकते हैं. जहां इकोनॉमिक्स आया, जहां ज्योग्राफी आया, जल्दी से इंडिया का मैप बनाया और उसमें दिखा दिया, है ना. रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यू डोंट हैव टू राइट, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव, लुक्स एज इफ द कैंडिडेट इज सो एक्सपीरियंस्ड. डायग्राम्स और मेक अ सर्कल, मेक एरोस, पॉइंट्स कवर हो जाते हैं. अब लास्ट क्या होता है, कंक्लूजन. कंक्लूजन में एक सेफ है जीएस के कंक्लूजन्स में, इज टू राइट सम रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी. ठीक है, तो अगर अगेन वाटर की प्रॉब्लम है तो मिहिर शाह कमिटी की आई थिंक रिकमेंडेशंस आई थी. फिर आरटीआई और वो सब है तो सेकेंड एआरसी तो बेस्ट है, दे हैव रिटन अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सेकेंड एआरसी ने ये रिकमेंड किया है. और कोई प्रॉब्लम है तो, और डोंट, अभी ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर मैम ने बोला है तो हम जाकर अब बस कमिटीज की रिकमेंडेशन ही पढ़ेंगे, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड ऑल दोज, बट बाय द ईयर एंड अपने आप याद हो जाएंगी. कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में, जीएस में, पॉलिटी में, हर जगह आप पढ़ते रहेंगे. तो बस मेक अ मेंटल नोट ऑफ दोज थिंग्स कि ये मैं कंक्लूजन में यूज कर सकता हूँ. श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट, ये सब, ये एक सेफ तरीका है. दूसरा तरीका है योर ओन वे फॉरवर्ड, योर ओन सजेशंस. कोई प्रॉब्लम पर क्वेश्चन है तो एंड इट विद अ सोल्यूशन. डोंट एंड विद कि हाँ हाँ सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज यू आर अ सिविल सर्वेंट, यू विल बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स योर सेल्फ, यू नीड टू नो द सोल्यूशंस. तो हर ऐसे बड़े मुद्दे पर अपने खुद के सोल्यूशन सोच के रखिए कि अगर ये किया देन वी कैन प्रोबेबली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो history type, if there is a question on history or something, then you can conclude with what happened after this. If there is a question on event or personality, then you can conclude on something ki okay, this event led to this, so this is the significance of this event, this deal, this act, whatever. तो ये हो गया answer writing. And again, having said everything, I know nothing can be changed until you practice. Just keeping all this in mind will not help. You will actually have to write and practice answers. Then only it will become very easy for you to implement. Now comes current affairs. Current affairs both for pre, mains, interview, everything. This is like one biggest doubt everybody has. Nowadays, earlier people used to ask कि madam क्या पढ़े, Indian Express या Hindu? I'm amazed to know that now people are asking, should we read the newspaper? And everybody, oh, we have heard if you read this compilation and this material and this, then you need not read the newspaper. Please, all these materials are very important, but they are not substitute to newspaper. Newspaper you have to read every day at least 2 hours to kind of form an opinion on those issues. Because if you are totally dependent on this material, interviewers will catch you on the day of interview, if not anybody else. Even mains mein they'll catch you. Only in prelims you might get an escape. So you have to read paper. But so I read the Hindu, only one newspaper. Second, I did not prepare notes. I used to just read the newspaper. I used to practice some MCQ based on the newspaper every day. So it kind of acted as revision for me. And by the end of the month, I used to revise entire month's newspaper through those current affairs magazine, monthly magazine. And before the exam, I used to take those compilations, monthly or the year end ka, PT 365 and mains and all that. So ultimately, revision ke liye, exam ke liye, those booklets only will come handy. But on a daily basis, you should read newspaper. Then mains mein GS 1, 2, 3 have the syllabus. There are those standard sources that you can refer. More important is answer writing. I have already discussed the structure of the answer. The most
worrying subject, I think, is GS4 for most of the people. Because even if the syllabus is given, questions are not predictable. It's a very lengthy paper. How to approach it? So I've got a score of 117, I think, in ethics, but which is a decent good score. But this is when I left 3 questions in part 1. So most important thing, complete all the question papers. This should be your first task, because even last year I could have got the same rank had I attempted all the questions. I had left questions worth 120 to 160 marks last year, which is huge for mains. And this year only thing I worked on to improve the rank was time management during the paper, nothing else. Same sources, same strategy, everything. तो एथिक्स में पहली चीज ट्राई करो, कंप्लीट पेपर करो. दूसरी चीज आई थिंक व्हाट वर्कड इन माय फेवर वाज केस स्टडीज, बिकॉज पार्ट 1 I think almost everybody writes the same answer. Part 2 can really help you jump up your score. So case studies के लिए क्या approach हो सकती है? Preparation के लिए what I did not read any book per se, but I attempted all the case studies of previous 4 years. क्योंकि अभी जब से ethics शुरू हुआ है, introduce हुआ है, तब के UPSC से के पेपर से लेकर अभी 2018 तक सारे GS4 के पेपर उठाइए, case studies खोलिए and attempt them on paper. Not just read कर लिया, solution पढ़ लिया, attempt them. And then you will realize, just like that West Asia repeat होता है prelims में, GS4 में 3-4 patterns repeat होते हैं. क्या क्या? You are police officer or something and law and order की situation है, ये हो गया है, वो हो गया है, how will you handle? Then you are in this department, hold a very nodal position, and there is some kind of corruption case going on, and there is a conflict between personal interest and professional interest. Then there will be some theme on some private company where you have to balance between environmental concerns and economic concerns. If you read all the case studies, you will realize that these themes are repetitive and they are important themes, and actually in services you will be dealing with these problems. So why don't we really kind of prepare an SOP पहले से कि इस टाइप की केस स्टडी आई तो obviously answer will be based on the question, but these are some common suggestions I will write. So this much preparation I did, nothing else. And while attempting, I wrote everything in points. Generally, case studies people do not write in points, no? So I would divide my answer into 5 cases. Ki case number 1, ki main aisa hai. Case number 2, and within that I will write points. Ki first I will do this, then this, then this, and then this. And I would always conclude a case study with a future plan. Ki currently, when I am a DM or something, अगर ये problem district में आती है तो this is going to be my approach, but for future I will do certain measures so that this incident does not take place again. So that kind of gives futuristic attitude, और वो एक बहुत positive impression शायद बनाएगा examiner के ऊपर. उसके अलावा what works nobody really knows, because none of us have really seen our answer copies, but I think this approach should help you in GS4. अब आखिरी में क्या बचता है मेंस में? essay and optional. Essay, if we talk about essay is 250 marks. So जब उसकी marks is equivalent to a GS paper, then why do we give such less time and attention and focus? Very honestly, time नहीं मिलता है. मैंने भी essay की preparation नहीं की थी, time ही नहीं मिल पाता है, but attempt करते समय उसको पूरी sincerity के साथ करना है. तो बस 2-3 चीजें आप कर सकते हो essay की तैयारी के पहले, और वो ये है कि make a list of some probable 20 to 25 essay topics which are repetitive. वो क्या क्या है? Poverty, inequality, women, health, education, some international scenario, pollution, environment. ये सब repetitive themes है, और ये theme सच में important है. उसको one or other form में पूछा जाएगा. तो क्यों ना हम इन themes के ऊपर कुछ एक कोट्स पहले से तैयार कर लें, है ना? तो हैव अ लिटिल डायरी जिस पर आप लिखिए ऐसे, उसमें आप ऐसे की प्रैक्टिस कर पाओ ना कर पाओ, कोई कोचिंग लगाओ ना लगाओ, डजंट मैटर, बट कोट्स लिख लीजिए कि ये 20 टॉपिक्स के ऊपर 3-3 कोट्स ईच. तो कुछ ना समझ आए अगर एग्जाम में, तो मेरा इंट्रो कंक्लूजन में तो आई विल बी एबल टू यूज इट. कोट्स फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज facts and figures, which I have already discussed, which will help you not only in GS but also in essay, because there will be a question on education. You should know the numbers कि हमारा enrollment ratio क्या है,
हमारा हायर एजुकेशन पेनिट्रेशन कितना है, प्राइमरी कितना है, सेकेंडरी कितना है, कितने मेन है, कितने विमेन है, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो क्या है. दीज आर ऑल रेशियोज एंड फैक्ट्स which seem very overwhelming today because you're just starting your preparation. By the end it will seem all normal. ये सब कहीं ना कहीं आप पढ़ लेते हो. All you need to do is to keep it in mind and use it at the right place. So these facts, figures will really help you. And third thing that you can do during the preparation is to attempt at least 2-3 essays and वही proper घड़ी लगा के 3 घंटे में 2 essays so that you are able to manage time. कई बार including me ये हो जाता है कि हम पहला ऐसे बहुत अच्छा लिख देते हैं और दूसरा बिगड़ जाता है क्योंकि टाइम नहीं बचता. वी एंड अप गिविंग 2 hours टू फर्स्ट ऐसे एंड देन ओनली 1 hour इज लेफ्ट फॉर सेकेंड ऐसे. ऐसे में डिविजन ऑफ टाइम शुड बी वेरी जुडिशियस. सम 15 to 20 minutes to brainstorm, 5 minutes to choose the essay and then 1 hour 5 minutes to write each essay. पहले से ही टाइमलाइन सोच कर जाइए. ब्रेनस्टॉर्मिंग में टाइम की कटौती नहीं करनी है. Spend at least 20 to 25 minutes on brainstorming. Make a diagram on the rough page. Open as many dimensions as possible. Write a rough intro conclusion there itself. And while attempting the essay, please be cool. Like 2018's paper was one of the toughest for essay. 17 was relatively predictable. They were all philosophical topics, very unpredictable. So those who lost their cool kind of messed up the essay. But that time you have to stay cool, open dimensions, think of something and think इनोवेटिव एंड ओरिजिनल. कि इंट्रो में मैं कुछ किसी स्टोरी के साथ शुरू कर सकता हूँ क्या, कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन से शुरू कर सकता हूँ क्या. दैट आई थिंक वन ऑफ द एसेज आई स्टार्टेड दैट टुडे आई वोक अप एंड पिक्ड अप द न्यूज़पेपर एंड देयर वाज हेडलाइन अबाउट judgment of Supreme Court on 377 and then this and this and this kind of leads to that customary morality has no place in modern society. It was, I think, the topic. So one paragraph just talking about newspaper headlines, current affairs, and then I kind of gave it a twist and introduced my topic. So these kind of intros make a good impression and then take your body, write paragraph wise. हाँ, ऐसे में point wise नहीं लिखना है. Try करे कि point wise नहीं लिखे. And then conclusion maybe be optimistic, come up with some innovative things and end with a maybe quote or a sutra from shloka from Sanskrit, something like that. And even if you are attempting the paper in English medium, you can write a quote from Sanskrit. It is acceptable. Okay. And even if you're writing the exam in Hindi medium, it is okay to quote an English quote. As long as you're giving inverted commas, it's acceptable. This is one doubt I had, that's why, and I clarified with somebody and that's why I'm clarifying here. Now last part of mains is optional. Optional is kind of a make or break kind of situation. अगेन प्री की तैयारी करते समय इतना इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती, फाइनल रैंक में बहुत लगता है कि ये ऑप्शनल होता तो मैं भी रैंक 1 होती है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड सो प्लीज सोच समझ के लीजिए अपना ऑप्शनल. एक्सक्यूज मी. 2-3 चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए. सबसे पहले इंटरेस्ट. चाहे कुछ भी ट्रेंड चल रहा हो, नॉट दैट ट्रेंड को मत देखो, दैट्स अ स्मार्ट वे, बट इंटरेस्ट को भी देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा amount of hours are going to be put in preparing for essay optional. So it's very important that it should interest you. For example, I took philosophy because it interested me. If somebody takes philosophy is not at all interested, will get really bored. So you should have interest. Second, syllabus. Syllabus should be relatively compact, especially if you do not come from a background, similar background, and you have to take a new optional altogether. Then go for an optional जिसका सिलेबस मैनेजेबल है, कॉम्पैक्ट है. एंड थर्ड, सोर्सेस, कि जिसके सोर्सेस, मटेरियल, सम गाइडेंस फ्रॉम टॉपर और टीचर अवेलेबल. एकदम नया ऑप्शनल ले लिया जिसमें कुछ भी गाइडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं बीच में खो सकते हो. और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं कि विच ऑप्शनल इज डूइंग व्हाट एंड हाउ आर पीपल एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स परफॉर्मिंग, बिकॉज इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर रैंक. And lastly, interview. How many of you think that you are going to appear for interview? I want all the hands. यार, start your preparation as if you are going to clear and that you will go to UPSC भवन. वही तो एक मोटिवेशन देता है ना. 2 चीजें आई थिंक मोस्ट एस्पिरेंट्स, एक वो यूपीएससी के इंटरव्यू की और एक लबासना की. ये सबकी यूट्यूब हिस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम अ लॉट मेनी थिंग्स ये 2 चीजें तो होती ही हैं. तो एंड इट इज़ फाइन, मोटिवेशन ज़रूरी है. हमने भी बहुत ये सब वीडियोस देखी हैं, लबासना की, टॉपर्स की, ये वो.
तो प्लीज तैयारी ये सोच के शुरू करिए कि हम इंटरव्यू देंगे, उस यूपीएससी भवन में जाएंगे एंड वी विल एंटर दैट हॉल वट एवर जो होता है विथ ऑल द कॉन्फिडेंस. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एटीट्यूड, योर कॉन्फिडेंस. उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग. तब आप लोग के चेहरे एकदम ऐसे स्ट्रेस नहीं होंगे, बहुत खुश खुश होंगे, क्योंकि बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू डू करंट अफेयर्स लाइक न्यूज़पेपर प्रॉपरली, मे बी 1 or 2 न्यूज़पेपर्स, क्योंकि बहुत न्यूज़पेपर पूछा जाएगा और इमीडिएटली कोई भी आपको कैच कर लेगा, बिकॉज देर आर 5 people स्टेयरिंग एट यू. तो थोड़ा भी आप गड़बड़ बोल रहे हैं तो देर विल बी पीपल टू कैच यू. सेकेंड, डैफ एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है दैट ऑल ऑफ यू हैव टू फिल इन आफ्टर प्रीलिम्स इफ यू आर अपीयरिंग फॉर मेंस, which is nothing but your biodata. You talk about everything, where you come from, your background, job, education. So questions are around that. So a lot of my questions were around DAF. So you have to prepare each and every word written in your DAF. And third thing, a lot of situational questions. You have ethics case studies, maybe a little tougher than that. They kind of put you on the spot and try to grab the real personality out of you. But in reality, it is actually not interview but personality test. I know every topper says that, but now having appeared for interview, I also agree that it is actually a personality test. So be confident, and interview is really fun. बहुत अच्छे से जाता है अगर आप confident हैं, और बहुत सारे mock interviews दे लें. बहुत सारे नहीं तो कुछ तो दे लें, to kind of have an experience, especially those who have never appeared for job, just finished their graduation and started preparing. To kind of going, to get an idea of that experience, I would suggest to go through mock interviews. So this was about my strategy, prelims, mains, interview. I think it was a long, detailed strategy. After this also, if you have doubts, you can ask towards the end. Now coming to the last part of this talk is the survival. This guy is the most interested in that part. So survival in ORN, survival in preparation, because I'm sure a lot of people are watching this video who are not really ORN, and a lot of people clear even if they do not come to Delhi and do not take coaching. हर जगह से हर तरह के background के लोगों के selection होते हैं. Now having spent some time into training, I've known so many people कि अच्छा लोग कितनी कठिन परिस्थितियों से भी आकर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचते हैं. तो बट मैं पहला साल तो एटलीस्ट मैं यहाँ रही थी ORN में 1 साल, और I did take coaching once, and so some tips. First thing, minimum sources, maximum revision. Very simple it sounds, but staying in ORN, it's very difficult to follow this. Why? You go out of the room, there are 10,000 bookshops, and there are 10,000 people to guide you. You enter the bookshop and they're like, अच्छा आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया गॉन डेज, आजकल तो ये नया मार्केट में आया है. बी अवेयर क्या चल रहा है क्या नहीं, ऑब्वियसली, पर बहुत किताबों के चक्कर में रिविजन नहीं हो पाएगा. जब आप एग्जाम दोगे देन यू विल रियलाइज लास्ट 1 month इतना हेक्टिक होता है, और आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड में होते हो कि जितने कंसोलिडेटेड नोट्स होंगे या जितनी कम किताबें होंगी उतना ईजी पढ़ाई हो जाएगी. तो इसलिए बुक शॉप पे जाने के पहले डिसाइड करें क्या लेने जाना है, वहां जाकर ना डिसाइड करें कि क्या लूं. दैट लिटिल वन प्रैक्टिकल टिप रियली हेल्प्स यू. सेकेंड थिंग, stay away from distractions. And this is applicable not just for people who are in Delhi, but everybody who is preparing for this exam, because it is little taxing. इतना easy नहीं है exam. तो when I came here, I was not really on many social media platforms that time. I was just on Facebook and WhatsApp. I deleted Facebook, deleted as in deleted the app, logged out everything. I was anyways not interested in Facebook much. WhatsApp is weakness of everybody, है ना, including me. तो WhatsApp deletion was a big decision during preparation. But I think that changed my life, at least for that year. तो जितना भी है इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस. तब जब तक वो नहीं करोगे बहुत डिफिकल्ट है. Stay away from too many parties, socialization, have friends, good friends, no denial, but all that can wait na. Once you get selected, go to training, do what you want. So at least 1 year you give.
And then after mains, if you get an interview call, you can download everything back, Telegram, WhatsApp, everything. That is one big decision, but it will really help. Practical advice. Third thing, library. It is a new culture, developing in Rajendra Nagar and everywhere, wherever there are preparation coachings. So people have mixed reviews about it. Some say ki it's bad, it's good. What I would like to say that during your first attempt, you are so motivated and driven, and you're reading everything for the first time, that you don't need to go anywhere to study. Room par hi aakar, you come from coaching or you're doing self-study, you have like, oh, I'm reading this for the first time, you're excited and you are so motivated कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. But I think उसके next attempts में ये UPSC की preparation थोड़ी सी exhausting सी हो जाती है, saturation आने लगता है, motivation जाने लगता है. ऐसे time पर I think library जाना helps. It helped me. So सेकेंड टाइम में आई वॉज ऑल्सो फीलिंग कि यार फिर से वही लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़े. तो दैट टाइम आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी, एंड व्हेन यू लुक एट योर नेबर स्टडिंग फॉर 12 hours, you feel, what am I doing in my life? This guy comes 6 o'clock in the morning, he is still not gone for lunch, studying. So that gives you sense of competition, it gives you environment to study, it gives you ideas. कुछ एकदम अच्छा सा टेस्ट सीरीज या कुछ आया है तो आपको पता भी चल जाता है. तो अगर if you're going to stay here only, then yeah, library helps. And that atmosphere, even if you're preparing at home, please try and devote one room to yourself for preparation, which is away from your TV hall and every other chaos. Fourth thing is support system. I keep telling this little story of Ramayana that जब हनुमान को पर्वत उठाना था और उन्हें लग रहा था ये नहीं हो पाएगा, तो भगवान जामवंत ने उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाया था कि तुम महावीर हो, बलवान हो, तुम नहीं तो और कौन. तो इसलिए आपके जीवन में भी आप एक ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो बार बार आपको आपकी ताकत, आपकी पोटेंशियल, आपकी स्ट्रेंथ याद दिलाए. सो यू नीड टू फाइंड दोज पीपल who encourage you, who remind you of your potential and do not put you down. They should not be those uncles and aunties who tell you कि कितने साल prepare करोगे and why are you why are you not clearing this exam and why didn't you pick up that good job package that was being offered by the from your college. They have to be those genuine friends, your parents, your siblings, who actually believe in you. They will make you feel nice, and then be nice to them. Don't be कि मुझे पढ़ना है. And do give some time to them, at least half an hour, 1 hour up every day you can give to those people who matter in your life. They could be here or not. Then इसी बात में बहुत common doubt आता है, especially those who are preparing here और मुखर्जी नगर और like भोपाल and हैदराबाद की main ऐसी जगहों पर कि group studies or not, partner studies or not. तो उसका भी मिक्स्ड ओपिनियन है. हर चीज़ लिमिट में करो तो हेल्पफुल है. अब ग्रुप ऐसा है कि 1 घंटा पढ़ाई, 4 घंटे मस्ती होती है, देन यू कैन टोटली अवॉइड बिकॉज दिस एग्जाम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट 1-2 ऐसे सिंसियर फ्रेंड्स हैं जहाँ आप एक्चुअली डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हो, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है. आप बोर हो रहे हो तो किसी बोरिंग सब्जेक्ट को साथ में पढ़ लो, तो इट रियली हेल्प्स. इन माई केस I had a friend Manju, here only we were together in Rajendra Nagar. We used to prepare all day together, especially those spectrum, polity, geography हमने साथ में पढ़ी है. I still remember, like because of her I think I remember a lot of facts. And this mains 2018 I have to give complete credit to one of my other friends, Jyotsna, who was also preparing, and we would discuss like 2.5 hours every day, and we would discuss only questions. किसी कोचिंग का मेंस का टेस्ट पेपर उठाया, क्वेश्चन देखा, एंड वी वुड बी लाइक मैं इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखूंगी, शी वुड बी लाइक मैं इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखूंगी. वी वुड जस्ट मैच, एंड ट्रस्ट मी इट्स ग्रेट. सो वी वुड गिव 4 to 5 minutes attempting the question, writing answer, rough structure of the answer, and work together on that question. So if you have such kind of productive partnerships, productive group, then go for it. Nothing like it. If not, then stay away. Self-study is the best. And last but not the least, there is no shortcut to success. Hard work is extremely important. It sounds the simplest, but it is the hardest. All our life we are being told, no, ki work hard, but it seems very boring. But trust me, whoever has cleared this exam, like I'm sure you've been seeing a lot of people on YouTube. कोई first attempt में है, कोई 6th attempt में है. Trust me, मेहनत सबने की है. कोई भी बिना मेहनत किए तो यहाँ नहीं आया. It just
लक और स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल किसी का फेवर कर गया, किसी का नहीं, बट मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी मेहनत जो कंसिस्टेंट हो, जो परसिवरेंस के साथ आए, जो लो और हाई फेसेस में भी बनी रहे। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया एंड यू गो बैक होम, that I didn't clear it, let's just chill for 2-3 months, then come back, then again will become part of that crowd and that cycle will continue. So in my case also, like so this was my second sincere attempt, but I also gave 16 my prelims, like along with college, like thesis, without any sincere preparation and everything. And that time also I was expecting a selection because cutoff came 1 or 2 marks. And I got the result and I missed by like a mark or something. So I was disheartened and very sad, of course. Though I knew कि prepare नहीं किया, it was hardly a sincere attempt. फिर भी I was so disheartened that I was crying and all, and I got a call from home that you come back home, stay here 2-3 months, and then you decide what you want to do in life. And I think that decision that I took that day, I called back night that I am at the library. I have a test paper tomorrow because I had joined thinking that I will be writing mains. I had joined the test and I was preparing. And I'm going to prepare as if I'm writing this mains. And next day I did go. I was crying while attempting the paper. Still I attempted. So it's not about like me praising myself. It's just I'm saying कि वो एक दिन होता है जब आपका दिमाग सही दिशा में होता है और आप एक सही निर्णय ले लेते हैं। तो आई थिंक उस समय मैंने इस तरह से जो पढ़ाई कर ली ना कि मुझे तो इसी मेंस लिखना है, तो इसलिए अगला मेंस बहुत इजीली निकल गया। तो आपकी प्रिपरेशन के दौरान भी ऐसे हाईज एंड लोज आएंगे। उस हाइज और लोज के टाइम पर आप जो डिसीजन लेंगे वही आपको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब नाव जल में छोड़ दी मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को तो धार क्या मझधार क्या। थैंक यू सो मच। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स। किस चीज के? प्लीज माइक ले लीजिए। मैम आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे जीएस सब्जेक्ट के? शॉर्ट नोट्स आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। फॉर ऑप्शनल आई प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर एवरीथिंग। फॉर जीएस वेरी few selective topics for which there are no standard sources. Apart from that, no notes. और न्यूज़पेपर के जो नोट्स प्रिपेयर करने हैं वो ऐसे डेट वाइज करें कि इस डेट को ये हुआ, या जीएस पेपर्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाए? तो मैंने तो बहुत एग्जॉस्टिव नोट्स नहीं बनाए थे न्यूज़पेपर के, बट इफ यू रियली हैव टू प्रिपेयर देन जीएस वाइज. So when I used to write answers based on these newspapers, I used to divide notebook into 4 parts. And जो भी जिस GS की category में fit हो रहा है, I used to write it there. That helps in end time revision. Date-wise notes won't help at the end. Okay. And how do you feel after clearing the exam? I feel great. It feels great. And what was your reaction when you saw the result? Saw the result. I didn't see the result. Somebody told me on phone that I cleared, and that time I was undergoing extremely rigorous training. So it felt great, relieving, and yeah, it was kind of that dream came true, because I told rank 44 was my dream rank, so 40 was close. So yeah, thank you. Yes, she has a doubt. You can ask. Good evening, ma'am. Good evening. So, ma'am, there have been talks by the toppers, like you also said, that read newspaper first, and secondly, you can revise it with the Current Affairs Monthly magazine, right? Now, the conflict here is like, if we are reading the newspaper, there will be certain recommendations or the facts or figures which will be repeated in the Current Affairs magazine, right? So, what happens is we end up writing the same thing, writing it first in our own notes, and then, you know, again we find the same thing in the Current Affairs magazine. So do you have any special tips? Like, we do not know what is going to be published after a month, right? So is there any special tip which you would like to give? Achha, so are you asking that should you prepare notes, Yes, given ma'am. you are not sure that what will come into that monthly magazine or not? So maybe something Exactly. important they might miss out. Exactly, yes, ma'am. Right. Yeah, so this happens. That ways your source is only one newspaper, and usually those magazines are prepared from 2-3 newspaper, Yojana and everything.
So it is high likely that we might miss out, Yes, but ma'am. they won't. And second, if you think something is very important, make a note. No problem. I also used to do that, especially mains. So 17 when I was writing mains, every day there was one or other article on triple talaq. And I knew it will be covered in the magazine. But because it was so compelling that I made a note for myself कि यार ये बहुत अच्छा point लग रहा है, let's just write it down. Similarly for prelims, if you feel कि this is a very important fact, either you write it in a notebook or write it on that sticky note and stick it in front of your table कि वो fact बार बार आप देखते रहो और याद हो जाए. पर एकदम exhaustive notes making is something I avoid because it takes a lot of time. Yes, ma'am, a lot Yes. of time. And ma'am, one more, one more Yes. question. So, ma'am, at times we find some articles that are loosely connected to the topics, but you know, there is a dissatisfaction inside us if we do not read that, and we run out of time if we attempt all those articles in a newspaper. So, what about those loosely connected articles? Like there was a article on like criminal justice system and Malimat committee report. Like such articles are, whether do we attempt such means read such articles? Oh, it's not loosely connected. It is very much part of your I'm syllabus. sorry, I might have given some wrong example. So but if there you're talking are- about criminal justice system and Malimat committee, it's extremely important. You should have read that article. I'm sorry, ma'am. And but I get your question. If there is an article which is loosely connected, then do read it. Nothing was waste. At the end of the day, even the articles which are not part of the syllabus will help you in essay and ethics, or in general building up your vocabulary and everything. So newspaper reading doesn't go waste. It's just to save time we kind of cut short. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, like I have just decided that I have to choose philosophy as my optional, Okay. or due to my interest in that subject, seeing various optionals also. So as I am from also technical background, no humanity background. So what will be your tips? Like I am going to start from a very scratch. Right. So regarding everything, like what should I do? Only I have कि मैंने choose कर लिया है कि मुझे philosophy करना है. So Right. what will be your tips regarding? So How you've to- decided that you want to take optional philosophy, and are you also decided that are you going to prepare on your own? You're going to go to any coaching, or you're going to prepare with a friend? Even I want that tip also, like what to do? It's your choice. It's your choice. If you want, you can take a guidance from anyone coaching, but then you have to club it with self-reading of those standard books material. So any optional, and especially philosophy, needs a lot of notes making. Because there will be multiple sources, only one source is not enough. So read all of that, consolidate all of that into one note, so that before mains you're able to revise it. Second, you have to practice answer writing, because structure of a philosophy answer will be very different from GS answer. Here the intros are going to be different, analysis and body is going to be different. So previous year questions again are very important in philosophy. It is one of those few subjects where questions are actually inspired from previous year. And yeah, that should be it, I think. These are the major two things. Then if I have to go in detail, I will have to get like subject and topic wise, but broad strategy should be this. Ma'am, one more question means what was your average duration if you consider for completing philosophy optional? Acha, average duration to complete the optional, 4 to 6 months should be enough. Integrated with your main study and as well as prelim study. Like you started from the day you decided कि आज UPSC अब तैयारी start करनी है तो चलो philosophy ले लिया. Like नहीं ऐसा नहीं था. I took some, when I started preparing, I had not decided my optional. I took some time to decide and then I started optional. So while I was preparing, or I did go to one coaching for philosophy, so that time only I used to. I'll tell you. Okay. मैम कंग्रेचुलेशंस. Yes. मैं इधर से Yes. Thank you. मैम मेरे को दो डाउट है इसमें. आप जो मैगजीन्स बोले ना मंथ का एंड में आता है तभी लेके पढ़ते करके, कौन से मैगजीन पढ़े थे आप जो मैगजीन पढ़े थे? Monthly magazine. हाँ मंथली मैगजीन्स जो करंट अफेयर के. I used to read either Vision or Vaji. वाजीराम. हाँ. प्रीलिम्स को कितना बार रिवीजन किए थे आप? आई मीन प्रीलिम्स बिफोर अपीयरिंग प्रीलिम्स हाउ मेनी Before टाइम्स? prelims, you talking about standard books? ओवरऑल जो Overall, स्टैटिक पोर्शंस multiple revisions. For example, Spectrum, I think I had read 4 to 5 times. बिफोर आराम से. Polity 4 to 5 times. Shankar 3 to 4 times. Very good number of revisions. Even those current affair booklets, I would have revised 2 times, 3 times before the exam.
मैम और एक जो क्वेश्चन है ना, आप जो प्लानिंग था आपका जो मंथली वाइज था कि ये वीकली था, जैसे आपका जो टाइम टेबल था सिलेबस को कैसे आप पार्ट करके डिवाइड करके पढ़ते थे? Yeah, that's what I just discussed in the beginning. That I used to decide a subject or two for the month on the first day of the month itself. And on that day only I used to decide, okay, I have to finish this much part of the syllabus. I am going to read it from these sources, and I'm going to attempt these tests for the syllabus. And then I would divide it week wise. कि ठीक है, 1 week for modern, 1 week for ancient, 2 days for medieval, like that. Okay. And then I used to follow it up. Okay, thank you, ma'am. Thank you. हेलो Yes. कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। Thank you. मैम 2 क्वेश्चंस पूछने हैं, शॉर्ट छोटे हैं। पहला, आपने इनिशियल में बताया था कि एज एन इंजीनियर इट इज़ डिफिकल्ट टू मीन्स हैव अ गुड राइटिंग स्किल एंड ग्रेजुएटली इट हैज़ टू बी इंक्रीज। सो आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। आई एम इन द 6th attempt and still not able to got the writing skill means। so आपने फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया, तो कैसे पता लगता है कि राइटिंग स्किल इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब कुछ सिम्टम्स पता हो पहले से, लगे कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि कई बार नेगेटिव फीलिंग बहुत आने लगती है कि इम्प्रूव हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, एंड द सेकेंड इज़ आप ऑलरेडी IPS ऑफिसर है, तो एज एन IPS ऑफिसर एंड एज एन IAS ऑफिसर व्हाट इज़ द डिफरेंस, मीन्स why to go from IPS to IAS? Okay. So first part of your question, answer writing. So we do have those doubts in the beginning that as engineers probably we won't be able to write good answers because we've lost touch in all those 4 or 5 years of engineering. But if you look at the result, it kind of fails that myth. तो इतना कुछ background का बहुत फर्क नहीं पड़ता, it needs practice. So I also used to have this fear, and initially I used to write bad answers, I must admit. But as I said, 2 to 3 months it takes, and daily practice, every day 2 answers, 3 answers. And then you ask how to know whether you're improving or not, hai na? So for that, maybe you can either join a test series so that you get reviews on your answers, or you can post your answers on those online forums where a lot many other people also post answers for the same question. So what I used to do, I used to be little apprehensive about posting my own answer, thinking that people will judge or it's good or bad. But I used to read others' answer, and I used to match their answers with my answer. Ki, okay, for the same question, they wrote these points, I missed out. They wrote much more impressive introduction than mine. Or I write much more better conclusion than this guy or whoever is writing there. तो दैट प्रैक्टिस ऑल्सो हेल्प्स। वो चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था ये पता लगाने के लिए कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ कि नहीं। दैट थिंग शुड हेल्प। एंड सेकेंड, बाय IPS to IAS, सो इट इज़ personal choice, but when I started preparation IAS, I started with the dream of becoming IAS. It was my first preference. And IPS was my second preference. So when I got IPS, I was happy and proud, still proud. But because I had attempts and IPS was always my first preference, I wrote exam again. But it's nothing because of this versus this. It was personal interest. हाँ? जो प्लेटफॉर्म मिलता है उसका डिफरेंस है क्या? मतलब प्लेटफॉर्म मिलता है उसका डिफरेंस। सी नेचर ऑफ जॉब इटसेल्फ इज डिफरेंट। सो व्हाइल इन IPS योर नेचर ऑफ जॉब इज मोर रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, preventing, detecting crime management, investigation and all of that. IAS's job is much more multidimensional. So you assume any department or field of government, from health, education, farming to even law and order, everything comes under an IAS prerogative. तो वो जॉब काफ़ी डायनामिक है, बट इसलिए नेचर ऑफ जॉब अलग है। आपको क्या एक्साइट करता है और आप क्या अपने आप को विजुअलाइज करते हो नेक्स्ट 30 इयर्स करते हुए, उसके बेसिस पे आपका डिसीजन होना चाहिए। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। Hi ma'am, here. यस, हाय। Ma'am, among the optional subjects, I mean, I'm interested and I'm good at history. So people suggest me that history is having a vast syllabus, so you should not select that. So I'm a bit confused about it. Do you have background in history? No ma'am, no.
Okay, so it's going to be a fresh subject. So why don't you buy some material of history based on the syllabus, read it at least for a week or something, and find out whether you're enjoying it or not, Yes, ma'am, I'm whether it's enjoying. manageable or not, and how much time will it take for you to complete it. Okay. Okay, and then also read some topper strategy in history, because I not from that optional, so I cannot talk much about it. तो वो शायद बताएंगे आपको कि कितना टाइम लगता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो दोनों चीजें देखकर then you take a call. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Ma'am, is there something like UPSC is biased towards some optionals? Like I'm in MSc first year in from Delhi University. Okay, so I want to take geology as an optional, but optional coaching is not available in Delhi for geology or anything. So I want to know, can I prepare it on my own and give the attempt? I am so confused about it. Is UPSC biased towards some subject? Geology is less sought among aspirants. So what do you think about it? I cannot really comment on this. We don't know. Ideally, there is no bias. Whatever optionals are listed in the syllabus in the UPSC's order, all have a equal footing and level playing field. But usually year-wise you see there are trends. So there are, if you analyze like top 100 ranks, there will be 20 people from one optional and just 1 or 2 with another. So that could also be just luck, or that those particular people perform well that year. But can ma'am one make it to the list if coaching is not available for that optional? One If prepared can. by our own. Yes, yes, yes. Okay, ma'am. And ma'am, second thing, how to choose hobby in DF? How to fill the hobby in DF? See, you don't choose a hobby. You have a hobby. So ma'am, we don't You know choose exactly, it when you're a kid. we don't know exactly what hobby we have or like something. So I know a lot of us worry about DAF and hobbies that you're going to write. Don't worry about it much. Worry about your prelims and mains right now. And whatever genuine hobby you have, no, you write it. It could be as simple as some reading books, watching movies, watching So ma'am, YouTube ask question from videos. hobbies too? A lot of questions. They did ask me a lot of questions from hobbies. That's why I suggest that you put a genuine hobby. Even if it sounds arbitrary, it's okay. You can explain that why and how I cultivated this hobby. Can baking cakes can be a Can? hobby? Baking cakes can be hobby of someone. Breaking? Cakes, baking cakes. Baking cakes, totally. They can ask 3-4 questions from your this. A lot of people put cooking as their hobby. Okay. And if you write baking cake, it will become more specific. They will talk about recipes from pineapple cake to black Thank you. forest. Hi, ma'am. Hello. Ma'am, as we have to prepare 250 to 300 words on each and every heading mentioned in the syllabus. You have to prepare? 250 to 300 words. Each and everything mentioned in the syllabus. Then we have the recent developments. Then we have the optionals. Plus we have the books. To have to compress all the things to that level so that we can revise all in 15 to 20 days. Yes. And remain always ready for the exam, not for the 3rd June. I got whatever you said except the question. I'm so sorry. I'm so sorry. Can you please repeat the last line? Ma'am, how to compress all the syllabus? How to compress, yeah. So that's why note making comes handy, especially in mains. Like especially optional में भी यही होगा. So there you can prepare notes. Mains में everything you can't. But if there are those topics like agriculture or something where you have too many materials, like syllabus के ऊपर कहीं का material भी है, current development भी है, and something else, or previous year question भी है, then you can prepare some consolidated note and keep it and revise it later. But honestly, syllabus is so vast, you probably won't get time to prepare notes for everything. What you'll end up doing is to prepare just the current developments from those sections or some standard source. For example, say agriculture. तो agriculture is one thing जो बहुत questions आते हैं और काफ़ी dynamic है. तो उसके लिए what I used to do, I watched Runal का videos for agriculture. तो almost static हो गया. Plus जो current booklets में current developments थे वो तो कर ही लिया. तो वो कंपाइल करके वहाँ पर आंसर लिख दिए. तो अब मैंने बैठकर नोट्स नहीं बनाए एग्रीकल्चर के कि वीडियो भी लिया और ये भी लिया एंड देन आई रोट डाउन. आई डिड नॉट डू इट, आई जस्ट डिड दिस. तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए.
मतलब अपने आप समझ आ जाएगा कि किन सब्जेक्ट्स किन टॉपिक्स के लिए मुझे नोट्स बना के रख लेना चाहिए और किन टॉपिक्स को मैं बस उसी टाइम पर ये बुक या मटेरियल रिवाइज कर लूँगा तब भी काफ़ी है. ठीक है, थैंक यू. हेलो मैम. हेलो मैम, मेरी प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि मैं एडिटोरियल कोई भी न्यूज़पेपर से पढ़ता हूँ तो मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाता उसके मैम. वो बड़ा बड़ा ही लिख पाता हूँ उसका मैम कुछ भी. हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स एडिटोरियल? शॉर्ट नोट्स ऑफ एडिटोरियल तो कभी कभी हो सकता है सच में एडिटोरियल इतना अच्छा और इम्पॉर्टेंट हो कि आप उसको छोटा ही नहीं कर पा रहे होंगे एंड यू फील दैट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट एडिटोरियल. तो द स्ट्रैटेजी और अ ट्रिक दैट आई यूज्ड टू अटेम्प्ट an answer based on that editorial. So I used to make up a question in my own head or I used to read it from online. Ki if there was some editorial on GST, okay, so I would prepare a question in my head कि अच्छा इसको GS3 के किस question के form में ये editorial आ सकता है, then I would write an answer. तो अपने आप वो editorial भी छोटा हो जाएगा और उसके अलावा भी 4-5 और relevant चीज़ें हैं वो भी आ जाएंगी. तो ये एक तरीका मुझे ठीक लगा था. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Ma'am, whenever I write an essay, I found when I compare with someone else, he or she and I, both the answers conveying the same message, but the word she is using is quite good quality, and the word I'm using is comparatively low as compared to that one. So does it affect? Yeah, it does affect. So, essay is one place where kind of, if not. It's not that you have to be a literature student to write a good essay, but a good command over language helps. So your language should be very fluid and simple and flowing. Does not have to be very difficult. तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि जो लोग अच्छे essays लिखते हैं among your own friend circle और toppers जिनकी answer scripts available हैं वो पढ़ो और वो बार बार जब पढ़ोगे अलग अलग लोगों के तो समझ आएगा कि अच्छा वो कितना सिंपल लिखते हैं या उनका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कैसे कनेक्टेड है या वो सेम चीज़ को कितने सिंपल सेंटेंस में लिख पाए. तो दूसरों का पढ़ पढ़ के ही इम्प्रूव होता है. कुछ चीज़ें ऐसी है इस प्रिपरेशन की कि उनके थोड़े से ऐसे ब्रूट फोर्स मेथड ही है सीखने के, कोई ऐसे स्टैंडर्ड तरीका नहीं है. और दूसरी बात चूँकि आप 2020 में लिखेंगे एग्जाम तो बहुत टाइम है, अभी जून है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम एक बढ़िया बहुत अच्छा लेवल का 150 मार्क्स वाला ऐसे लिख पाओ. शुरुआत वैसी ही होती है. पर आई वुड सजेस्ट कि हाँ अगर ये एक प्रॉब्लम है तो टॉपर्स के ऐसे पढ़ो. मैंने पढ़े थे. जीएस में ज़्यादा वोकैबुलरी का गेम है नहीं. वेरी सिंपल लैंग्वेज. जिस लैंग्वेज में आप पेपर पढ़ रहे हो या वो बुकलेट्स पढ़ रहे हो या नॉर्मली बात करते हो वो लैंग्वेज इनफ है. बट बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. आपके सेंटेंसेस शुड बी ग्रामेटिकली साउंड एंड दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से. दैट्स इट. जीएस के आंसर्स में बहुत अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू मैम. थैंक यू. Ma'am, there are some questions in mains like you have not heard anything about them. Yes. So how to deal with that kind of questions? Yeah. So are you writing? Are you attempting 2020 or this year? Yeah, 2020. 20, no. So by the time you write mains in 2020, you would have some or other idea about almost all the questions. Gradually, as you read GS, newspaper, optional, everything. एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बेस तैयार हो जाता है अपने आप नेचुरली कि कुछ ना कुछ लिखने की स्टेज में आप होंगे. और यही ब्यूटी है मेंस की कि सच में 5-6 क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में कुछ आइडिया ना होगा, जिसमें एकदम क्लिक नहीं करेगा कि वो क्या पूछने चाह रहे हैं. तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शनल है. इफ़ इट इज़ अ वेरी थियोरिटिकल काइंड ऑफ आंसर जिसमें आप आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे कुछ आंसर बना सकते हो, देन अटेम्प्ट इट. इफ़ इट्स अ क्वेश्चन which is little technical, straightforward and you don't have any idea about it whatsoever, then don't attempt it. Like वो Bose-Einstein pair पे इस बार GS3 में question था. तो some people had a rough idea, they attempted. Some people from chemistry background attempted very good answer and some had absolutely no idea. Then probably you can skip it. Attempt rest of the 19 answers properly. और यहाँ पे answer writing और structure practicing helps. कि कुछ ना हो आओ तब भी लिख के इतना होता है ना कि वो 3-4 पॉइंट्स आप लिख ही लेते हो. लाइक RTI वाले कुछ पॉइंट्स हैं वो हर जगह जाते हैं. थैंक यू. थैंक यू. मैम,
मैम आपने मेंशन किया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया करते थे, तो उसकी सोर्स क्या थी, कहाँ पे वो क्वेश्चंस वगैरह मेंशन किए जाते थे? एक सोर्स तो सिक्योर करके एक इनिशिएटिव है, सिक्योर, वो वहाँ पर 8 क्वेश्चंस रोज आते हैं। पर मैंने सुना है कि उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ सिमिलर ये शुरू हो गया है कि पेपर के बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन हर रोज आते हैं। अच्छा। और वहाँ पे बाकी लोग आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं। और जो दूसरा जो आपने मेंशन किया कि हाँ हम आंसर्स कंपेयर करते थे एक दूसरे के साथ, वही सेम सोर्स। सो दे पोस्ट क्वेश्चंस एंड एवरीबॉडी पोस्ट आंसर्स एंड देन यू कंपेयर द आंसर्स। थैंक यू। Ma'am, I am from engineering background. Can I take civil engineering as my optional? Civil engineering? Yes, you can. It is one of the optionals. Okay, हेलो मैम, करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए आप मंथली मैगजीन रीड करते थे या फिर जो हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका नोट बनाना चाहिए, किसके ऊपर रिलाई करना चाहिए? दोनों पे. That's what I just explained, that I revise through magazines, monthly magazines, but I read newspaper every day, and whatever issue or topic which seemed compelling to me, I did make a note out of it and kept it handy in a notebook, or some fact related to prelims. So I used to revise both, but mostly for revision purpose I relied on that. Again, coming back to optional, ma'am. Yes. Ma'am, what is the importance of shlokas in particularly philosophy optional? And if we are getting to write this, is it we can write it in Hindi, or we need to write it in Hindi and again translate writing it in English, or writing same like we write something like Hindi कोई लिखते हैं ना, like English में ही. Right. So philosophy में there won't be actually many topics where you'll get to write shlokas. पेपर 1 का एक इंडियन फिलोसफी के भी कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ आपको लिखना पड़े, वहाँ पे भी यू डोंट हैव टू राइट कंप्लीट श्लोकास, जस्ट 1 लाइन, जीवो ब्रह्मेव न परहा या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या. दीज आर स्मॉल लाइन्स जो जिस फिलोसफर की है यू विल हैव टू राइट, बट यू राइट दैट इन इंग्लिश. हाँ, GJIVO like that, in that format, and then you explain that line. Yes, so it's not that you need a lot of shloka practice, and that all is not needed. हेलो मैम. यस मैम, वो पूछना था जैसे ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल पेपर 1 जो होता है मेनली थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल होते हैं और वो स्कोरिंग भी होता है. राइट. तो उसके लिए वो जीएस से बिल्कुल अलग होता है. हाँ. तो उसका क्या अप्रोच क्या होगा, उसका आंसर राइटिंग है? जीएस ऑप्शनल 1 का, ऑप्शनल 1 का हर ऑप्शनल टू ऑप्शनल वेरी करता है. मेनली ये देखा जाता है जैसे वो थियोरेटिकल बेस्ड ही होता है ना पेपर 1. हाँ, थियोरेटिकल बेस्ड होता है. फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू अगेन फॉर माय ऑप्शनल. सो फिलोसफी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरी ऑफ अ फिलोसोफर. सो बीट प्रतीत समुत्पाद और सम कंपैरेटिव एनालिसिस. सो इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑन प्रतीत समुत्पाद, सो यू इंट्रोड्यूस विद कि व्हाट वेयर इज दिस थ्योरी कमिंग फ्रॉम. इन आवर केस इट कम्स फ्रॉम बुद्धिज्म. सो गिव विद 2-3 लाइन इंट्रो कि व्हाट डज दिस थ्योरी मीन, दिस इज दिस थ्योरी ऑफ दिस स्कूल ऑफ फिलोसफी. देन यू टॉक अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, what does it mean, उसके angles, उसके dimensions, उसके different explanations by different schools. Then next come you compare that school or particular philosophy with other schools of philosophy कि उन्होंने भी similar theory की बात की है क्या, अगर की है तो किस तरह से की है. You compare that. Towards the end you kind of write down the negatives of that philosophy if it exists, if somebody else has attacked criticism of that thing, and in the end you can maybe talk about significance of it. So this is how you go normally in my optional. So that's why I say that it is kind of different from GS. I think Pol Science maybe if it's a question on some theory of a political thinker you can apply the same. But if it's like a math, chemistry kind of optional, then it's very different. That's why I'm saying you prepare your strategy according to the requirement of your optional. And ma'am also जैसे जीएस के प्रिपरेशन के साथ ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर किया जाए? जीएस की प्रिपरेशन के साथ ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो वो थोड़ा टाइमलाइन पर डिपेंड करता है. कुछ लोगों का ये तरीका होता है कि अगर अगले साल जून में एग्जाम है तो वो इधर दिसंबर के पहले 2-3 महीने सिर्फ ऑप्शनल को देते हैं कि सुबह शाम सिर्फ उसकी बुक्स, नोट्स, रिविजन, टेस्ट, एवरीथिंग. एक तरीका होता है कि आप दोनों साथ साथ करो. यू डिवाइड हाफ अ डे इनटू ऑप्शनल, हाफ डे जीएस, और जैसे जैसे प्री पास में आते जाए सिर्फ
वीकेंड पे थोड़ा रिवाइज कर लिया, फिर प्रीलिम्स के 1 या 2 महीने पहले एकदम छोड़ दिया, फिर जैसे ही प्रीलिम्स आए, इफ यू थिंक कि स्कोर इज सेफ, देन सबसे पहले ऑप्शनल पिकअप करो. दिस इज हाउ यू मैनेज. ओके मैम, थैंक यू. थैंक यू. Anybody else? ठीक है. Okay then. Thank you so much and best of luck.